प्रेम बरोबर असेल ना तर अख्खा जग जिंकेल आपण. Very excited. I still can't believe I'm married. She loves staying with people. She likes meeting new people, but that completely depends on her mood. If she doesn't want to meet someone, she'll make it a point, then she doesn't meet someone. Best part about our relationship is that we've been together only for 6 months in 6 years. So that's the best part, and we still till date keep loving each other the way we used to when we met the first day, and I hope so that goes on for another 60 years. मला साद घालती ताही दिशा मला वेड लागले प्रेमाचे मला वेड लागले प्रेमाचे 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 Those were the very funny moments, and that was the time we came to know about Nishita. तो निशिता कशी असेल, आम्ही कधी भेटलो नहीं है तिला. सो मन में बहुत कुछ चल रहा था, कैसी रहेगी हमारी होने वाली भाभी. But then we met, you were nice and we love you. लग्न झालंय तुमचं, बकरा अजून एक शहीद झालेला आहे. तर बी ब्लेस्ड, स्टे ब्लेस्ड.
असंच प्रेम करत राहा आयुष्यभर. प्रणव लहानपणापासून खरं खूप गोड मस्ती करणारा मुलगा, पण खूप प्रेमळ, अतिशय प्रेमळ मुलगा आहे तो. त्यामुळे निशिता आणि प्रणवनी पण एकमेकांशी असंच वागावं आणि छान आयुष्य जावं त्यांचं ह्याच्या पुढे. आणि हा ऋणानुबंध असाच आनंदित राहावा अनंत काळापर्यंत अशी मनापासूनची आमची दोघांची इच्छा आहे. खूप या दिवसाची मी खूप वाट बघत होते आणि अतिशय सुंदर आणि प्रेमळ जोडी दिसते दोघांची. सुनो ना संग मरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा. Nishita and Pranav, on this auspicious day of your wedding ceremony, my sincere blessings to you and Pranav. May God give you a long, healthy life, wealthy and prosperity throughout your life. आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा. सुनो ना संग मरमर की ये मीनारे. To start with, Nishita is the most loving sister anyone could ever get. She's most beautiful. She's an angel of our house. She has handled me like not like a younger brother but like a son. I've been like a best friend to her. She is like a best friend to me in a form of a sister. So all I could say is best of luck. I love you a lot, and Pranav, you better take care of my sister. जब से मिले तुम हमें आंचल से तेरे बंधे, दिल उड़ रहा है. सुनो ना आसमानों के ये सितारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे. जितना अपने मम्मी पापा से डर नहीं लगता उतना दीदी से डर लगता. और जब भी उसको गुस्सा आता है तो भी ऐसा लगता है कि कुछ बॉम्ब फटा है उसके अंदर. हो वो बहुत प्यारी है, बहुत क्यूटी है, वो सब बहुत क्यूट है उसके लिए. और मैं 2 ही शब्द कहना चाहता हूँ कि निशिता इज सुपरस्टार. निशिता की याद में बता रहा हूँ, जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी वो टाइम पे निशिता उसकी मौसी की बहुत ही प्यारी, उसके पास ही सब वो कर रही थी, उसके पास ही सब बड़ी हो रही थी वो. और वो टाइम पे उसको ऐसा लग रहा था कि ये मौसा जी नहीं है, ये तो मेरे कोई दुश्मन आ गए हैं. और जब भी उसकी मौसी के साथ में मैं कोई इंटरेक्ट करूँ या उसके साथ जाता था बाहर घूमने फिरने या कुछ भी, तो निशिता को ऐसा लग रहा था ये तो कोई उठा के लेके जा रहे हैं मेरी मौसी को. ये एक चीज़ जो थी वो हमें बहुत फनी लग रही थी. और वैसे तो निशिता बहुत ही प्यारी, बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग लड़की है और हमारी फैमिली की हीरो है. और उसके बारे में तो कुछ भी हम बोलेंगे वो सब कम है. बस प्रणव, हम आपको शुभेच्छा देते हैं और आपकी लाइफ में आप बहुत ही आगे प्रगति करें, बहुत ही खुश रहें और हमारी सब लोग की यही शुभकामना. निशिता माझी खूपच लाडकी मुलगी आहे आणि आता ती लग्न करून चाललेली आहे, तर मला तिच्यासाठी मी खूपच खुश आहे. पण मला वाईट पण वाटते की ती मला सोडून जाणार आहे. पण एकच मला ते माहिती आहे की माझा जावई खूपच चांगला आहे आणि तो माझ्या मुलीला एकदमच खुश ठेवेल, तेवढं मला माहिती आहे. म्हणून मी तिच्यासाठी खूप खुश आहे. નિશિતા નાની હતી ત્યારે મારી પાસે આવેલી, એકદમ મેં જ એને મોટી કરી છે અને આજે એના લગ્નમાં હું એને તૈયાર કરું છું. એટલી મિક્સ ફિલિંગ છે, એટલી ખુશ છું એના માટે, બટ આઈ વિલ મિસ હર અ લોટ. લવ યુ બેબી. અને ઓલવેઝ એની હેલ્પ, કોઈ બી વસ્તુની ક્યારે બી જરૂર હોય, આઈ એમ ઓલવેઝ ધેર ફોર યુ ડાર્લિંગ. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. નાનપણથી નિશિતા અમારી પાસે જ રહેલી હતી, મોટી થઈ છે. નાનપણથી અમારી પાસે મોટી થયેલી છે, તો અમે કોઈ દિવસ ડોટરની કમી નથી અમને લાગી. મને 2 સન છે. લવ યુ.
best part about Pranav is that he's so cool, he's so loving. He would do anything for me especially. I know that for a fact because I'm his sister, and he loves me to bits, and I love him to bits as well. Through Pranav I met Nishita. The first time we just spoke over the phone when I came to India, and I didn't meet her then. I only spoke to her over the phone in 2007, and then in 2010 when I came, that's the first time I met her. But before that we used to speak over the internet, and yeah, we used to chat, and then we got close. We got close over the internet actually. And then in 2010 we finally met, and it was just amazing. It was something else. Yeah. And what we love doing together is to make Pranav jealous. He does get jealous of us. Or maybe he fakes it, I don't know. That is possible. Yeah. Yeah. I would like to wish them a very happy married life. They make a wonderful couple. I think they're the best couple I've seen. Yeah. Nishita, don't push Pranav around too much. Okay? And Pranav, continue to love her as he does. Pranav's parents are, I don't want to sound cliche, but they're wonderful people. I mean, they love me like their own daughter. I know that for a fact, and yeah, I feel the same about them. Nishita's parents are also very, they've always been nice to me, knowing that I'm her best friend. Yeah. I just want to say, love you both. Mwah. होके तेरे रातों से कहते हैं लोग, हम तो सवेरे हैं वो सच हो गए जो, सुनो ना दो जहानों के ये नजारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा, सुनो ना संगे मरमर. आहे दादा, आता आमचं लक्ष ठेवा. तुमचं झालं आटपलं विषय, आता आमचा विषय चालू करा.